Okay, let's start with Mr. Rakesh. Rakesh, let's start the mock with you. Ready for the mock? Mr. Rakesh? Yes, sir. Yes, very good. Rakesh, introduce yourself. Thank you, sir. Give me opportunity for introduce myself. My name is Rakesh Zangid. I'm complete my MTech from UEM Jaipur. I'm currently practicing in State Pro in guidance of Akash sir. Okay. Mr. Rakesh, what are the technical skills you have right now? Right now, I'm currently currently focus on State Pro and in 2 week ago, मतलब Okay. What you know in StatPro? in State Pro, I'm know about how to analysis load like a seismic load, wind load, dead load. Seismic, wind, and dead load. Which IS code we use for dead load? Dead load. IS 875 first. Part 1. And how to calculate wind pressure? Hmm. Manually or Yes, manually. sir, according to IS code, we have a formula VB into K1, K2, K3. Explain K1, K2, K3. Sir, I think K1 is a risk factor, Okay. K2 K2 is a probability, मतलब terrain height factor, Okay. K3 topography factor, and VB is a wind speed, basic wind speed. VV is the basic wind speed. What do you understand by K1? So probability factor, What is probability factor? What is probability factors? Okay. Next question from you is what is shear force? sir, in any structure which force is come from vertical direction. From vertical direction is called shear force. Yes, force. What is the benefit if we check the shear force of any structures? Benefits. What are the benefits if we hire structure engineer for a project? Very simple question. So we calculate different types of loads in a structure, and if a structure gets some load from, then we analysis how to is respond. What are the load acts on building? Dead load, wind load, seismic load, And live load. okay, why should I hire you? Because sir, I'm dedicated to work, and I I want a bright future, so I continuously hard working. How many lectures you watched in StatPro? Sir, 24. Only 24. Yes, sir. Why? And you created the Excel sheet? Yes, sir. Okay, for 24 lectures. No, sir. 18 lecture. This is wrong, na? You got 2 days holidays, right? Or one Yes. day holidays. So you need to update that, right? Okay, sir. I'm update.
today. Are you serious for your career? Yes, sir. Yes, sir. Try to do, because your Okay. marks is not showing you are serious. Main problem what you're facing right now is your communication. Yes, Okay, sir. try to join any friend group. They can discuss in English, or you can join any, like you are in any batches of Gurukul communication classes. No, sir. Try to join Okay, sir. anywhere, you try to join. It's not like Gurukul, you can join anywhere, just improve. Okay, our Okay, sir. target is you can get the selections, that's it. Okay, sir. Okay, try to update as soon as possible, and send me tomorrow your Excel sheet, how many lectures you completed. Okay, Yes, sir. Yes, sir. I'm going to update here, so try to show me. Okay. Yes, sir. Okay, QTR project you done? Sir, I'm currently working on last project, but current project not working. ओके, ट्राई टू अपडेट, बिकॉज साथ नहीं चलोगे तो पीछे हो जाओगे, फिर ऐसे हो जाएगा, अरे यार जाने देते बहुत पीछे हो गए, तो तुम्हारा Okay, प्रॉब्लम sir. हो जाएगा. ओके. Okay. ओके, नाउ मिस्टर सहजान. सहजान इज नॉट देयर. ओके, गुलजार जी. गुलजार जी. Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. आर यू कंफर्टेबल फॉर मॉक राइट नाउ? Yes, sir. Yes. ओके, ग्रेट. Guljar ji, he just explained me the K1 and he said something. What is K1? Can you just explain K1 in wind analysis? Sir, K1, K2, and these are the coefficients used for calculation of basing wind pressure. Okay. Wind pressure. K1 is the topography factor of the area. Topography factor of the area is K1, and K2? K2 is height of it is related to as far as I remember, it is related to the height of the building. Like From ground level to suppose it is one floor, it is 3 meters. It is not suppose. okay, and K3, sir? Sir, I don't remember this time. I think your wind analysis is not prepared. That right? You attend that last lecture. I was teaching you, na, in the last lectures, the wind analysis. Sir, I didn't because I was ill. Yes. I was bad. Last topic was the wind analysis. I just teach in deep manually how can you calculate the like wind pressure, wind force coefficient, everything in that lectures. Try to watch that. Sir, these are given in the code. I have seen. Yes, that is in code, but whatever you explain, that is wrong. Yes, sir, Okay. it might be wrong. Yes, and now if we'll talk about the shear walls, what are the benefits of shear wall? Benefit of the shear wall is to resist the lateral forces upon like wind forces, earthquake forces. It is the benefit of the Okay, what do you understand by lateral forces? lateral forces are those forces which act which are perpendicular to the vertical axis of the of a structure. Okay, if we got lots of torsion in our buildings, how can we fix the problem? Sir, for torsion, this shear wall is the best, and then seismic detailing is also another option to deal with it. Okay, suppose I got the warnings in StatPro that is elastic modulus not provided in structures. How can we fix that? So simply we have to go back and then for steel it is 2000, suppose 10 raised power, and for concrete it is very less, and it is simply we have to put that option. You Put install that. the RCDC software? Sir, I installed that, but my problem is currently with the simple start pro. It is not giving me the result when I go for analyze. After run analysis, that works, that option works, but when I go to analyze the structure, beyond that, my RCD start pro does not work. Means your StatPro is not working well. Yes, sir. So try to uninstall and then install again. Okay, sir. Sir, I wanted to share my screen if you
later on in Okay, the. if we get the time, definitely. But there is very easy process. You can just go to control panel, just uninstall the program first, and then install again. That is the simple process. Okay, if you get time, definitely we'll try to share. Okay. Okay. Now how many lectures you completed in Stat Pro? Sir, I am very far behind. 16. Very less. And Excel sheets you created for the 16 lectures? No, sir, I didn't. Because this is a second chance to definitely, if you after the trainings, how can you upgrade, you understand well, right? So try to come with everyone so that you can finish all the project on time and you complete the QTR projects. Pardon, sir? QTR projects, I just sent you that in last class. I think you do not completed them because you not attended the lectures. Sir, QTR project. I was bedridden for last. Try to focus, Guljaji, because because your last performance was from the today's performance, that is last was good because you are with the everyone. But right now you just completed 16 lectures, so this is not fair, na? Try to Sir, finish the lectures and send me the Excel sheet tomorrow. Okay, I'll wait for your Excel sheet, how many lectures you completed, and if there is corrections, I'll just teach you that. Okay. thank you, sir. Okay, Galjaji. Now, Mr. Aftab, Muhammad Aftab. Hello, good evening, sir. Good evening, good evening. Aftab, introduce yourself. Sir, my name is Muhammad Aftab Ismail. Uh, I've completed my BTech from BMS College of Engineering. I'm currently doing my internship at Unique Civil under the guidance of engineer Akash Pandey, sir. Okay. In that internship, what are you learning right now? Sir, mainly the internship is focused on to make the students industry ready. Mainly they teach us software and how to go about it, how to design buildings, like how to go about it in a professional way. Then they also teach us about all the necessary codes and other necessary things to keep in mind while designing. Uh, so it's an all-round course internship. Okay. So right now you learn the software as you mentioned here, that is StatPro, right? Yes, sir. Okay. Definitely in StatPro you completed your foundation design. Yes, sir. How many types of footings we can design in StatPro? Sir, in StatPro, we can design mostly all kinds of footing, such as isolated footing, slope type, then combined footing, then mat foundation. We can also design deep foundation, such as pile foundation and pile caps. But as we are using cracked software, we can't design raft or a mat foundation. Okay. So mainly we can design 4 type of footings, right? Yeah. Where we need to design isolated footing? When the load coming on a column at the base of the column is relatively less, then at that time we opt for and also footings are like they're not closely spaced from each other. That time we can opt for isolated footing, and also we have to keep in mind the safe bearing capacity. It should also be relatively good. Okay, so suppose we got the 300 kilonewton loads and we have a choice of isolated footings, but in that choice there are 2 types of footing. One is pad footings and second one is slope footings. Which one we need to prefer? Sir, if you go by the economic point of view, the slope footing will be economic. But if you aren't worried about economy, then pad foundation can be opted. In the form of a load perspective, you can just suggest me which one is better. Suppose we have a lots of loads, so in that place isolated will be good or pad will be good? Sir, in my opinion, I think slope will be better. Slope will be better. Okay, great. Now in StatPro right now learn this software, so definitely you install the RCDC also. Yes, sir, I have installed RCDC. RCDC is made by which company?
It's made by currently Bentley, sir. Sorry, Bentley. Bentley. What are the uses of RCDC? Sir, in RCDC, after performing analysis, we can design various components of a building, such as beams, columns, even foundations and all we can design, and also pile caps. Or pile cap also? Okay. Yeah. Difference between pile cap and pile foundations? Sir, pile cap is just it's like a pedestal kind of thing. In a footing, we provide pedestal so that we can transfer the load equally onto the footing. So likewise, pile cap is also like in pile cap, unlike shallow foundation. If we have provided isolated footing, there will be only this one footing will be there, so a load will transfer on that. But here pile caps, sometimes we design three piles, four piles. So to distribute load equally among them, we provide pile cap. Maximum how many piles we can use in StatPro? Uh, Sir, I don't remember it properly, but as far as I can remember, I think five or six piles. Okay, more than that. Well, how many lectures you completed in StatPro? Sir, I've currently completed 25 lectures. I'm on the 25th one, ending participant. And Excel sheet you mentioned, share Excel sheet. Sir, my Excel sheet isn't complete. I'll show it to you by tomorrow. Sure. Yes, Okay, sir. I'll show it. I'll wait for the Excel sheets, because Guljarji also going to share and our case is also going to share, and you too, and your communication is good. Just focus on technical as much as possible, because structure has the unlimited points, right? So you need to cover Yes, as sir. much as possible what are the most important, which I'm going to teach you already in groups, so that you need to prepare. That's it. Okay, overall your performance is Okay, up sir. to the mark. Okay. Thank you, sir. Okay, great. Now after Rakesh, there's Vishwajit, and after Vishwajit, that will be Vikas, then Prathamesh. Vishwajit, on your mic, please. Hello, sir. Hello. Yes, Vishwajit, introduce yourself. Sir, my name is Vishnu Pandey and I have completed in BTech in civil engineering, and now in currently I am doing an internship on structural structures and structural concepts by the guidance of Akash Pandey sir. And after that, about my strength and weakness, I cannot more convincing in this time. Okay. What are your strengths? Not prepare for that. No, sir. Okay. What's your hobby? Hobby is sir sketching Sketching your and hobby. watching YouTube blogs. YouTube blogs. Who's your favorite blogger? Recently, I watched Akash Pandey sir blog, My and blog. motivating to me. Okay, but there are, because I just started. I'm not a blogger. I can't say like that, because I just made the video is up to my mood, because my main focus is not to become a blogger. That is just a try to move and try to motivate you, so that you can learn something, whatever experience we have. But who's your favorite blogger? No, sir. No, There is no not no such specific. kind. I only watch in my leisure time. Okay, got it. Means there's no any specific bloggers in your minds. You just watch any bloggers videos, right? Yes, sir. Okay, great. So like, because when you just say why I'm asking these questions,
I'm just going to ask so that if you tell me the some specific name, then I can judge you which type of content you like most and which type of persons is your ideal persons. Suppose there are lots of YouTuber, I can't give the names. You understand well. So if suppose your blog that blogger is your ideal because you're watching that, if you're watching someone life, because right now I'm reading the books, I'm reading the autobiography of someone, so that means what, I'm inspiring with that persons, right? So if you watch any blogs, so you just tell the specific name, keep these bloggers, maybe that blogger will be best. Suppose like I just asked which movie you like most, just give me the answers. Which movie you like most? Hello, Movie. you like most? So lastly, I have seen Nani Admir. Means No, sir. there is no any movies you like which like definitely was there many movies. I was Three Idiots, like my favorite is KGF. Okay, that was excellent. Maybe if someone like that movies, do comment. I like KGF. When I watched that movie, I just thought like there is something you need to like, the creation level was very high, so I like that creativity. So means if you try to judge me, so you can judge me as a creative persons. I like that movie because of that creations, है ना? So if you just said कि I like Three Idiots, my favorite is also Three Idiots also. So I can judge you, okay, you are the persons who believe in the knowledge in the form of anything. ठीक है, तो एक तुम्हारे पास एक फेवरेट मूवी जरूर होनी चाहिए ऐसे जो एचआर को पागल बना सके। ठीक है, तुमको नहीं है कुछ तो एक मूवी देख डालो, अगर तुम ऐसे याद कर रहे हो कि लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखा है तो बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, कितने साल पहले देखा तुमने मूवी? No, sir. I watched last year, but in this time for mock interview. Okay, but see, like whenever you say, so we can judge you. Like right now, I'm here to judge you. That is wrong, but you are in an interview. So if you say like that, so I can say what I'm thinking right now. Your memory is very short memory you have, right? So Yes. if suppose you just mention your strength, you not give the answer for the strength. Suppose you give the answers ki I'm a positive person, so I can say you give me an example of your positivity where you prove that ki I'm a positive person. If your memory is good in good levels, you can remember any stories and you can tell me, right? If not, that means you have a memory loss problem. Okay, I can understand, I'm not judging you, I'm judging you as a interviewer. Got it? And Okay. now Mr. Vishwajit, which IS code be used for ductile detailings? No, sir. Okay, and for seismic analysis, which IS code be used? IS 1893 2007. 1893 2007. No, sir. 1893, but year. Here there are two codes, one is 2002, one is 2016. My next question is, what is the new updates in 2016 version? Got it? So why I'm asking this, because I just want to know how much you update yourself in your domain. Okay, Vishwajit? And now Okay. maximum percentage of steel, how much we can provide for the column? Maximum is 4%. 4. And why not more than that? Suppose I just want to provide the 10%. What will be the problem we can face if we provide the 10% steel? Sir, then the density will be changed, sir. And steel is very costly, sir. Suppose I have a good money, so I don't mind about the money. Any other problem we can face rather than money if we provide 10% steel? Because this is very creative questions.
Okay, maybe think about that. If you not get the answers, I'll tell you that. Okay, and minimum percentage still how much we can provide in column? Minimum is 8.6%. 6%. 6 Yes, sir. 6 in column. Maximum you say, you're column. saying 4, and right now you're nervous. 0.86, sir. 0.86. 0.86% we can use in column in minimum, and why not less than that? Sir, if we reduce the steel, then maximum strength will not occur. Suppose I just For increase the concrete percentage and reduce the steel percentage, what will be the problem we can face? ductile problem will be invisible, Yes, sir. ductile will be the definitely. So it when you just decrease, the tensile strength will be reduced. Yes, What the will, concrete is a compressive member, sir. yes, and you mentioned your hobby now. Your hobby is, Yes, sir. sorry, Hobby. yes, your hobby is, what's your Hobby hobby? is, sir, hobby is to become a good engineer. Okay, why you want to become an engineer? Sir, I have studied in the engineering subject, and then I will motivate how the engineer can do for our day-to-day life and build the any type of structure and shape our day-to-day. ओके, फिलहाल तुम थोड़ा सा आज आंसर अच्छा नहीं दे पा रहे हो विश्वजीत. ओके, नो इशू. फ्रॉम योर लास्ट मॉक टुडेस परफॉर्मेंस इज लिटिल बिट मे बी थोड़ा सा मोटिवेशन हाई लो हो गया हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे. एंड हाउ मेनी लेक्चर्स यू कंप्लीट इन स्टेट प्रो? It's 26 lectures. 26 lectures you completed, and you completed the excel sheets also, I think you just send me na. Yes, sir. Great, very nice. Okay, Vishwajit, nice to talk with you. Just try to enhance what I'm facing right now कि maybe that motivation का कुछ problem जा रहा है, या फिर nervous हो रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हारे आज के इंटरव्यू मुझे. ऐसा क्या लग रहा है तुमको? क्योंकि आंसर्स उतने सॉलिड नहीं आ रहे जितना तुम दे सकते हो. योर कैपेबिलिटी इज मोर देन वट एवर परफॉर्म यू टूडे. ठीक है, तो Yes, सोचना. sir. हम्म। बोलो बोलो बोलो. सर वही कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और हाँ, वो तो होता ही है सर. ठीक है, कम्युनिस्ट तो अभी होता ही है. और तो ये कंपनी तो नहीं पूछेगी ना, तो हमें करना पड़ेगा. स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट का भी सर थोड़ा क्लियर नहीं है. और क्लियर नहीं है, दिख रहा है वो. ठीक है, तो वो इंटरव्यू में दिख जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम जा रही है. तो इसीलिए तो अभी देखो, आज तो तुम लोगों ने किया. अब याद करो कि लास्ट टाइम तो कई लोगों ने अटेंड ही नहीं किया था मॉक को. अब उनको बताओ, इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ. इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए तुम कहीं पर अप्लाई करते, वहां पर शॉर्टलिस्ट होते, फिर कम से कम तुम 500 1000 रुपये लगा के वहां पर जाते, इंटरव्यू देते, फिर आते. वो एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पर आराम से मिल गया ना. ठीक है, तो वेरी गुड. बट Yes. तो तुम्हारा कंसिस्टेंसी तो अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं. तो डेफिनेटली विल गेट द इम्प्रूवमेंट. जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एज वेल एज योर टेक्निकल ऑल्सो. नाउ मिस्टर विकास, Mr. Vikas, on your mic, Yes. and then Prathamesh. Yes, Vikas, introduce yourself. Good evening, sir. Good evening. Hello, everyone. It is my pleasure to introduce myself with you. My name is Vikas Karali. I belongs to Odisha. I completed my schooling and graduation from Odisha only. Now I am doing internship on structural analysis under the guidance of Er.Akash Pandey, sir, where I got to know many more concepts about structure. That's all. Okay. Right now, you're doing the internship. Just tell me about your internship, what you're learning there, and what you improving there. Just tell me about your
trainings means internship? So at, at first, um, sir taught us about basic AutoCAD, and then after doing all AutoCAD, then we started Start Pro. Nearly going to complete it in few days. And simultaneously, RCTC also started. So what they teach in AutoCAD, what they teach in StatPro, not explain that. Hello, What they teach in you in StatPro. sorry, your sound is not audible properly. Okay, I said what you know in StatPro. Okay, and, uh, Okay, you in can just Start Pro, I how to design column and beams, multi-story building, and how to analysis foundation, wind analysis, and seismic analysis. okay. How to calculate seismic analysis means seismic force. Seismic force. And when V VB equal VB into K1 into K2 into K3. BB equal to K1, K2, K3 for seismic. Yes. From which I scored. Sir, sorry, you asking about seismic, huh? Correct. Yes. So which I scored we use for seismic? One 1893 2002. In that IS code, there is a functions like that. K1, K2, K3. Yes. Right now, What is axial force? axial force on any column or any it is a vertical force exactly pointed at the center at the center. In center. Yes. Okay. What do you understand by biaxial column? Uh, uh, mm, the load which are the load directly not at the point but uh, at the side of the column. What is bending moment? Bending moment, bending, mo- bending moment is a moment of force either to the left and right of the section. What are the questions I asked to you in your last mock? You remember? Yes, sir. What was the questions in your last mock? Sir, last month you asked about mm, this one. You asked about my Why I'm asking this question? sir. Mm, sir, I'm unable It's to okay. Yes. Why I'm asking? Just tell me that only. sir, to know the what we taught in previous. I'm asking this. Suppose today I'm asked to you from you the questions, and if you don't know the answer, that is okay. Suppose your seismic answer was wrong, but after this mock, are you prepared that question answer? If not, then what is the value of that question answer? Oh, okay, sir. Got it? Yes, yes. आज हमने कुछ पूछा और तुम जाके उसको अगर नहीं आया कोई बुराई नहीं, हाँ, नहीं आना वो बुराई नहीं, ठीक है? ठीक है। बट प्रॉब्लम इज घर जाके उसको पढ़ा भी नहीं, हाँ, देन correct, sir. दैट इज द प्रॉब्लम ना. Yes. हमने लिखा क्या उन क्वेश्चंस को? मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ कि राकेश ने 24 लेक्चर्स वॉच किए, गुलजार जी ने 16 किए, आफ्ताब ने 25, विश्वजीत ने 26. व्हाई एम आई राइटिंग दिस?
फ्रॉम दैट आई एम जस्ट चेकिंग, मेरे पास इनका लॉस डिटेल भी रखा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. तो आई एम चेकिंग कि हाउ मच दे इम्प्रूव्ड, राइट। Yes. तो अभी Yes. मैं लिख रहा हूँ कि तुम्हें कितना इंप्रूवमेंट आया, तो तुम्हें भी लिखना चाहिए ना कि मेरा लास्ट और इस बार में इंप्रूवमेंट क्या आया, Yes, sir. राइट। Yes. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ओके, मिस्टर विकास, व्हाई शुड आई हायर यू? Because I have those relevant skill which can benefit you in doing many projects What's your and selling multi-story project. what's your Multi what's your selling expectations? starting 25 to 30K. What are the services you're going to provide me in 25 to 30,000? Means 1,000 a day you're demanding. What are the services you're going to give me? I do every I do every design concept of building Like, and design comes from analyze from column, beam, foundation. but as per your knowledge, what you're showing right now, you're not able to present the seismic analysis. Then how can I trust on you कि you can design my building? Sir, I know how to execute seismic analysis. But whatever you explained, that was wrong. But that question you asked, huh, that is wrong. That means you don't know how to analyze the building or the seismic, because seismic is the compulsory as per Yes, sir. government law, Yes, right? yes, sir. So if your interview is like, you feel like गलत गया interview, don't demand money, okay? Okay. You can say ठीक है, डिमांड कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर लगे कि मैंने थोड़ा बेस्ट किया हुआ है, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो कि अभी तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए, ठीक है, और मैंने तुमको पढ़ा भी नहीं पाया, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि ये मेरी फी जो है वो 3 करोड़ रुपए है, क्या बात करते हो यार, पढ़ा भी नहीं पाया, 3 करोड़ किस बात का ले रहा हूँ, ठीक है। तो यू नीड टू से एट दैट सिचुएशंस एवरीवन, इट्स नॉट अबाउट बिकॉज आई एम टॉकिंग, इट्स फॉर एवरीवन। देखो अभी इसमें लोग यही सोचते हैं कि सब मेरे से पूछेंगे, मैं क्वेश्चन सोचूं, नहीं। विश्वजीत का भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना विकास का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर ये लिख के नहीं रख रहे हो तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, और वीडियो को दोबारा कोई वॉच नहीं करता, मुझे भी पता है, मैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डाल देता हूँ कि चलो ठीक है। तो अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हमारा इंटरव्यू खराब गया हुआ है, मान लो कि तुमने टमाटर की सब्जी बेच रहे हो और टमाटर हमारे खराब है, तो वी कांट डिमांड टू मच, Yes, है ना। बट yes, अगर हमारे टमाटर बहुत अच्छे हैं और मार्केट में कोई नहीं है, तुम 25 में क्यों बेच रहे हो, 45 में बेचो, 65 में बेचो, क्या फर्क पड़ता yes. है ना। तो यू Yeah. कैन जस्ट से कि एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, Okay. ओके। एंड Yes, उसके बाद जैसे इंटरव्यू किया, अगर उन्होंने बोला कि टेल मी द नंबर्स, तो गिव द स्मॉलेस्ट नंबर, 20,000, 15,000, because you need to learn first, yes, sir. okay। Thank you so much, Vikas. This was and just tell me the, like, how many lectures you completed in stat pro? 26. 26 you completed, and you completed the excel sheet also, I think, right? Sir, access it up to 24. Okay, yeah, everyone just okay. Thank you so much, Vikas. And tomorrow your assignments is just watch 27 and give me the excel sheet of 27. Okay, sir. Only excel sheet is the target, okay? Everyone will just watch the 27 up to the 27 lectures and give me the excel sheet. This is the assignments for tomorrow. Now Mr. Prathamesh, on your mic, is there Prathamesh? And I think he's not audible right now, no issue. And then Mr. Vishal, take, I don't able to move, okay, no issue. What's the reason, Prathamesh? Okay, Vishal, let's start with you. Yes, sir. Mr. Vishal, introduce yourself. First of all, good evening, sir. Good evening. Thanks for giving me this opportunity to introduce myself. I am Vishal Bhosle. I am from Baner, Pune. I completed my Bachelor of Engineering from TKT Kolhapur, and also I completed my diploma from KBB Polytechnic Satara. Now I am pursuing postgraduate. Sorry, now I am pursuing structural Gurukul training from Akash Pandey, sir, by Unique Civil. Right now, which software learning in that internship? I learned AutoCAD software completed, and now I am learning StatPro software and Uh, RSP. what are the topics you know very well in AutoCAD?
That is 2D drafting and so annotation, uh, make how to make detailed drawing, submission drawing, uh, section, elevation, plan, center line plan, most important. Do you know building by laws? Yes, sir, I know the building by law. What is building by law? It is a law governed by the created by the local authority for the safety of the public. What are the advantage if we follow the building by laws for the project? So what are the advantage we can get? For the better town planning Hmm. and also for What is building line? building line is a line marked by the local government for the Okay. What is FAR and how can we calculate the FAR? FIR is the floor area ratio. We can calculate by the total area divided by construction area. Total plot area divided by construction area. Divided by construction area. What's your strength? My strength is I am self-motivated and disciplined person, and I can done work in given time with more accuracy. Give me an example of your self motivation. When any negative thoughts come in my mind, I can tackle them by the meditation or some positive thoughts by itself. Maximum how many hours you did the meditation? Some minimum 20 minutes. Maximum, your maximum was limit. Max. Maximum no limit there is, but minimum 20 minutes. Maximum How many minutes you completed maximum? That I'm asking. going to 40 by 50 minutes. 40 by 55. 45 to 50 minutes. Okay. Give me an examples where you just feel that you are the self-motivated persons. Sir, just I told you in some depression or negative thoughts comes in my mind. Yes. Can Any motivate example? myself. When interviewer asks any examples, give the any situations. Okay. Okay. Recently, Can you try. can just say recently I feel कि Yes. I can't get. Recently, means Yeah. I left my job from site from Yes. junior engineer as a junior engineer. Then after that, I am in a small or big depression. So I can motivate myself, and I'm finding opportunity through Google in different ways in civil engineering. How can I improve my career or a different branch of career in civil engineering? So I meditate and then I clear my thought process and I searching new resources for that purpose. Great. Don't be like for everyone. Don't be demotivated for the things because see, what you feel like because you are searching the job for 20,000, 15,000, 35,000, 40,000. That's it, or maybe 50,000. That is a very less amount. Okay, so if you want to get the motivation, just you can just think this is very less amount. If I'll give you the service for that things, definitely everyone going to give me the price. Suppose I ask the question from Bikash ki if I'll give you the 30,000 means 1,000 per month per day, so what are the services going to provide me? कुछ सर्विसेज रख डालो. आज मैंने एक वीडियो बनाया इसी पर रिलेटेड. द वीडियो इज हाउ टू अर्न मनी समथिंग लाइक दैट. समवन गिव मी द मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि ये सर इस टॉपिक पे वीडियो बने. चलो. So the like you can just say कि source of that thing was कि learn something and then you can get the job. तो जूनियर इंजीनियर की जॉब गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ नया सीख चुके हैं, अब इस पे जॉब लग जाएगी. मे बी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, राइट. Yes. डोंट बी डिमोटिवेटेड विशाल बिकॉज यू कैन लेफ्ट आई थिंक 25,000 के अंदर ही सैलरी रही होगी मे बी स्टार्टिंग रहा होगा, राइट. Yes. Yes. तो फिर इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है.
Okay, when I got the salary of 40,000, someone said कि like if you do the mistakes, मैं बहुत mistakes करता था ऑफिस में. Mistakes कैसे करता था कि like कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं बोल देता था कि यार ये गड़बड़ हो रहा है. So they said कि if you do like that, they are going to fire you because they give me the warnings of 2 to 3 times कि don't do like that, we are going to fire you. So I said okay, ठीक है. तो someone says कि just try to search the job because if they fire you, how can you get the new job? So I said I just started with my 12,000 salary. So if I'm right now in 40, definitely if I'll go outside, I have a skills. I can get new other any other openings ना. So don't be demotivated विशाल. कहते हैं ना कि जिसके पास बेचने के लिए कुछ ना हो, ठीक है, वो करेगा तो सही बोल रहा है. लेकिन जिसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, उसको टेंशन क्या है, राइट? राइट नाउ यू हैव Yes, AutoCAD knowledge, StatPro knowledge, Revit knowledge, then you have a many things, right? so now I have many more skills. यस. वो बोलो ना, कभी मेरी दुकान में सप्लाई नहीं हो रही है, अरे माल तो होना चाहिए भाई, ठीक है. एकदम लेटेस्ट करंट माल रखा है हमने जो चाहिए मार्केट को, भाई कौन नहीं खरीदेगा, राइट? अभी आज के टाइम पे Yes, धोनी जिस टीम में चला जाए, कौन नहीं खरीदेगा धोनी को, बताओ क्या रीजन है? स्किल्स, राइट? yes, तो yes. स्किल्स की पूजा होती है. ओके, विशाल, व्हाई शुड आई हायर यू? Because sir, I have skill and I have ability to complete the work in given time with more accuracy. And this is the starting of my career in structural engineering. Uh, so I give my 100% for every project, and I will prove myself यू through जस्ट your company. यू जस्ट सेड कि आई हैव अ स्किल्स, ठीक है. अगर कहीं पर शादी किसी की हो रही है, ठीक है, और अंदर खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हैं, और एक बंदा गया गेट के बाहर, वहां पर दाल चावल का स्टॉल लगा लिया, मान लो मैं गया वहां पर, मैंने दाल चावल का स्टॉल लगा लिया, कोई नहीं खरीदेगा. स्किल्स है मेरे पास दाल चावल की ना, बट कोई खरीदेगा क्यों नहीं? क्योंकि भाई अंदर पूरा भरा पड़ा है, इतने अच्छे अच्छे आइटम, ठीक है, मेरा कौन खरीदेगा? तो तुम्हें यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है कि आई हैव अ टेक्निकल स्किल्स विच रिक्वायर्ड फॉर योर कंपनी, विच रिक्वायर्ड फॉर योर वर्क, ठीक है. जब ये बोलोगे, स्किल सबके पास हो सकती है, पर आपके लिए रिक्वायर्ड है क्या, वो जरूरी है ना. विच रिक्वायर्ड फॉर योर कंपनीज, एंड आई कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स व्हाट यू हैव. इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो कि मेरे सिर्फ मेरे पास स्किल है ये सफिशिएंट नहीं है. आई हैव स्किल विच रिक्वायर्ड फॉर योर कंपनी फॉर योर वर्क, ऐसे. Yes, sir. ओके. ओके, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन विशाल? As per industry norms. As per industry norms. Okay, thank you so much, Mr. Vishal. This was nice to talk with you. And how many lectures you completed in StatPro? I completed 27 lecture. All right, great. And QTR project, I drafted grid lines in AutoCAD. This is very time consuming work. And also imported file in StatPro, but analysis and design is remaining. Okay, and Excel sheet you created? Sir, Excel is not created, but bullet point I wrote down on my notebook. Send me Just tomorrow. need to enter in Excel sheet. Send me tomorrow. Okay. 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 Now next is Mr. Sunil, and then Prakhar, and then Moria. If you reach the Moria home, just do comment. Okay, let's come with Mr. Sunil. Yes, sir. I'm home. Okay, okay, Moria. Hello. Good evening, sir. Good evening, good evening. Sunil, why you want to start your own business? So, uh, I want to start my own business because I want for someone work for me, and I want give the job. Okay, just give me the minute first because there is, I think, any null is open. So like I'll just close them, then I'll just a minute. Okay, sir. No issue.
Okay. Now, so you want to start your own business, and because you want to give the jobs to others, right? Yes, sir. Okay. Suppose you just started your business. What are the Yes. steps you need to take so that you can grow your company? First of all, sir, we need some finance, Okay. How much approx? approx 10 to 15 lakh. Okay. Then hire some person which has skills, Okay. and start with some small small projects. Okay. If, And suppose I'll give you that 15 lakhs. Okay, what you need. What are you going to do in that 15 lakhs? uh, First of all, first Why I'm asking this question? Because I know you want to start, right? That's why yes, I'm asking the question like that. So that means you don't have a plan right now for that, yes, sir. right? So if you started your business from 15 lakhs, definitely you're going to do the first mistake. You need to start your business from 1 rupees. Just think, how can we start from 1 rupees? And then we'll go for that 1 rupees means what? When I started, I was started with 2000, and you it when I just say, okay, I'll spend this much, so it, if you have a big plans, so definitely you can be, but for big plans you need to prove first कि I'll just completed this much. Suppose I right now if I'll just started the business in CR, so because I just prove the lakh, so if lakh is completed, so I can think about the CR, but I can't think about the 1000 CR right now. I need to finish first 100 CR na, Yes, right? So you just if you want to some like that, so you just do the plan for that. And first you just mention, say, first was the money was the wrong. Second, you just mention I'll started the hire the persons. This is also the mistake. You need to do first from yourself. Okay. If you are the person जो झाड़ू भी लगा सकता है, जो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकता है, जो मार्केट भी डील कर सकता है, that means you are prepared for all the things. ठीक है. One of my like father friend's son means you can say my brother, you can say he just started the business right now, and his net worth for now you can say that is in 10 cr to 12 cr approx. But before started the business, he just started to work with there are different persons for 4 years, and sadly what he got that in 4 years 5,000, 6,000, 10,000 only. Everyone said, why are you doing this type of things for 4 years, 5,000, 10,000? Because he was MBA. So he said I'll do something, then I'll show you that. And when he just completed their 4 years, he not spend any money. And next means fifth year is he just earned approx 5 cr. What do you learn from this story? take small steps. टेक ए स्मॉल स्टेप. उसने क्या किया? हर चीज को जाके हर किसी के यहाँ पे जाके काम को किया. ठीक है. वेंडर के पास जाके वहां पर भी जॉब किया, सप्लायर के पास जाके वहां पर भी जॉब किया, सेल्स के पास जाके वहां पर भी जॉब किया. ही वॉज नॉट फोकस अबाउट द मनी बिकॉज उसका प्लान बड़ा था. एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रिएट फॉर 100 सीआर तो आराम से बनाएगा, वो पक्का है. तो आई एम नॉट सेइंग द कि पैसा बहुत कमा रहा है यही उसकी अच्छाई है. Is like what I learned from that person, he's not focused about the money, he's focused for the learning. That's why he got that. Okay. Now Mr. Sunil, right now you were preparing for the structure engineering. So
if we started the column orientation, providing the column orientation, what are the steps we need to focus for column orientation? For column orientation, uh, first is uh, first is we start from one corner. We saw the which is longer span, the orientation or the which is longer side, the column long. Okay, minimum how much size of column we can provide? 0.23 by 0.23 meter. 0.23 by 0.23. And beam? Beam same. Minimum slab thickness how much we can provide? 100 mm. There is any formula for the beam slab depth calculation? Not remember, sir. Okay. How can we provide beam depth? Is there any formula for beam depth? Not remember? Yes. Okay. Difference between ties and stirrups? Ties used in column, stirrups in beam. Okay. Don't be feel कि मैं तुम्हें demotivate नहीं कर रहा हूँ सुनील, ठीक है? Yes. मेरा काम है एज अ मिरर शो करना है ना, ठीक है? Yes. हम उसमें से नहीं हो सकते कि हम तुम्हारी वाहवाही करें और वो स्टेप तुम्हारे गलत हो, है ना? कोई भी अगर कोई भी सोच रहा है कि अरे यार सब तो डिमोटिवेट कर दिए, जैसे स्टार्ट बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, जॉब के लिए तो ओके है, बट ऐसा हो सकता है कि वो बोल रहा है कि मैं स्ट्रक्चर कुछ बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना कि तुमको मिरर दिखाना एज अ मेंटर मेरा काम है, ठीक है? तो ये मैं सोचना कि मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे प्लान को गड़बड़ किया या फिर ऐसा कि अरे सर ने क्या क्वेश्चन बोल दिया कि 10 लाख नहीं होना चाहिए, 15, सब कुछ होना चाहिए एज पर योर प्लान, यू कैन डू एज अ मेंटर। मेरा काम क्या है, आपको सही डायरेक्शन देना है ना? Yes. तो डिमोटिवेट मत होना कि अरे यार बिजनेस नहीं करना No, चाहिए क्या, no, sir. ठीक है? मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, पता चला तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, मैंने डिमोटिवेट करके गड़बड़ है, तो इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट शोइंग द मिरर। Yes. ओके, थैंक यू सो मच सुनील, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू। ठीक है विशाल, तुम्हारा अभी एक और मॉक होने वाला है, डोंट वरी, तो हम कवर कर लेंगे एवरीथिंग इन माय माइंड। विशाल, सुनील जस्ट गिव मी द अपडेट कि स्टैट फ्रॉम आपने कितने लेक्चर कर लिए? 27, sir. 27। यू कंप्लीट द एक्सेल शीट आल्सो? Yes, sir. Great, very nice. Okay, let's come with Mr. Prakhar and then Shubham. Good evening, sir. Good evening, good evening. Prakhar, why you joined late? Sir, actually मैं बाहर था सर, अभी पहुंचा हूँ. And you missing the many classes like in your Sir, last weeks? फीवर हो रहा था सर लास्ट फ्यू डेज से, तो लास्ट 3 क्लासेस मैंने मिस की थी. Which fever? सर वायरल चल रहा है, कफ हो गया है, फीवर हो गया है काफी. So in viral you can attend the lecture. You are young boy ना? यस सर. Oh, सर नेबुलाइजर वगैरह काफी दवाई चल रही है इस वक्त, काफी नींद आती रहती है सर पूरे दिन. but you are young boy, you don't think about the viral fever यार. जब तक 106 ना पहुंचे क्या फीवर है? अरे 106 में तो बचूंगा ही नहीं. अरे कुछ नहीं होता, क्या बात करते हो? ठीक है, एक लाइक 102 तो एज राइट नाउ यू व्हाट योर बॉडीज ऐसे ही चल जाए वो, ठीक है? इतना हमारे पास खुद का अपना ताकत होना चाहिए। वायरल मीन्स व्हाट, क्या है, कीटाणु लड़ नहीं पा रहे हमसे, तो हम थोड़े धराशायी हो गए, हम बीमार हो गए, बट 102 का फीवर वर्क वो मत सोचा करो, ठीक है? एंड यस, I have made a plan. I have shared you via Gmail. ओके, यू कंप्लीट द QTR प्रोजेक्ट? सर 18 by 40 वाला जो था वो complete Okay, किया. that you completed. Okay, I'll check that. Okay, now And let's sir, compare. I Yes. also tried downloading RCDC, हो नहीं रहा सर. Okay, whatever fails you got, they can just send me the screenshot of that. फेल बता रहा है सर कि वो कह रहा है 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गए हैं. Okay, और वो बोल रहा है पाथ दिखाइए, पाथ दिखा रहा हूँ तो सर कैंसिल हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है बाद में. okay. Send me that photo कि only default path is there or any else error. Yes. Okay, just Yes. send me that. I'll just try. If not possible, I'll just share you the screen. But first of all, you just make consistency.
Yes. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यू हैव, बिकॉज व्हेन यू जस्ट ज्वाइन तो आप सोचो तुम्हारा एम क्या था ज्वाइन करने का. Yes. ओके, Structure एम to. एम को नहीं बोलने का, एम हमेशा इंपॉर्टेंट है. चोट लग रही है, क्या हो रहा है. कल Yes. मैं ट्रैकिंग करने के लिए गया हुआ था, तो हमारा मेन टारगेट क्या था, हमें ऊपर पहुंचना है. ठीक है. Yes. और वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि यार बहुत दिन बात कर रहे हैं, इतना एक साथ नहीं चढ़ते या फिर ऐसे ऐसे नहीं करते. मैंने कहा अभी तो मुझे सिर्फ वही दिख रहा है. ठीक है. Sir, मेरे I've यस done my classes. यस I've seen the video lectures of the classes. Last 3 I missed. सी सीन करना एक अच्छी चीज प्रकार, दैट्स ग्रेट. मींस यू कंप्लीट द स्टेट फॉर 27 लेक्चर. No, sir. The 22. 22 तो वैसे ही पीछे Only हो. 22. Yes. दूसरी चीज क्या होता है, डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डेली नहीं कर रहे हैं ना, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. Yes. बिकॉज व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड कि यार खत्म करना है, अब क्या करोगे, वॉच करोगे एक तरफ से एक तरफ तक, याद नहीं हो रही हो पॉइंट्स, है ना, यहाँ नहीं जा रहा है ना. और यहाँ तो जाके भी क्या होगा जब सब कॉन्शियस माइंड में नहीं गया. Yes, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है. यस सर मैंने 19 में बीटेक कंप्लीट की थी, जिसमें से लास्ट सेमेस्टर मैंने जॉब की थी. करेक्ट. ऐसा ही एमटेक में भी हुआ था सर. मोरोवर मतलब जो मैं कंस्ट्रक्शन में ही जॉब कर रहा था, तो क्या मैं एक्सपीरियंस अपना लास्ट सेमेस्टर से बनवा सकता हूँ? No. When you just completed more than 6 months from any company, then only you can show that Yes, as a. sir. So I started when my 8th semester started in January 2019, and I worked there till my MTech started in July 2020. So it's approx 1.5 year. Then you can mention. तो मैं लास्ट सेमेस्टर का भी ऐड कर सकता हूँ सर उसमें? मैं ये पूछना No. चाह रहा था रेगुलर कोर्स में. No. From which date you started, from that date you can just mention. सर I started in my last semester. You have a offer letter for that. ऑफर लेटर तो नहीं है सर. ऑफर लेटर If you have a registered offer letter, then only you can say. सर मिल जाएगा वो तो कंपनी से, मतलब Yes. काम किया है, लेजिट काम किया है मैंने उसमें. So you just show after completing the degree. डिग्री के बाद का. Yes, that is the rule. कि if you are in degree, if you are doing the full time job, that means you are not focused for your degree, na. Yes sir. Okay, let's come with your mock. Yes. What is shear force? Shear force is the axial force which building applies on soil. It includes self weight of the building. Complete Which IS code we use for ductile detailings? ductile detailing. I don't know about it, sir. What's your favorite movie? But I don't watch movies often. You never watch any movie? The last time I watched it was BTech second year in hall. Which one? I don't remember. It was approx in my BTech. I watched movie in a hall. I never went. First movie which you watch? In hall, sir, Goal. Goal. John Abraham's Goal. This is Goal Mal or Goal only? Goal, sir. Okay, John Abraham movie. Yes, sir. Okay. It was a football-based movie. You like that? Yes, sir. It was a nice movie. Okay. Which subject of civil engineering you like most? The subject earlier I used to like building material and property. Now I'm liking structure designing, and I'm getting deeper. I'm more interested in it. Okay. What's your strength? My strength is I can work very fast. In case of tension and everything, I can work calmly. It doesn't affect me much. Pressure doesn't affect me much. But you said in tension. In pressure or tension. In pressure. Both are wrong. Yes, sir. Both You have are. a tension, you have a calm. Yes, sir. How it is possible? Okay. Sir, I said I can work in tension also. You can say I can work in pressure. Pressure, yes. In tension, बीवी से लड़ाई होगी, काम कर रहा हूँ. ये कौन सी बात हुई यार? गड़बड़ कर दोगे पूरा काम. जी. Okay, don't say. You can say कि I can work in pressure also. Pressure कैसा है? कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज करके देना पड़ेगा, कल सुबह मेल करना है. ये प्रेशर है.
टेंशन नहीं है ये। Yes. टेंशन में कभी कोई काम नहीं करवाएगा तुमसे। टेंशन में अगर कोई काम कर रहा है तो कंपनी समझेगी पागल है। Yes. ओके प्रखर, what is axial load? So axial load is the load which is coming in y direction. From it is in vertical direction. Types of shear wall. Rectangular type shear wall, plain rectangular type shear wall. ओके थैंक यू सो मच प्रखर, दिस वाज नाइस टॉक विद यू। थोड़ा पढ़ाई करो, तुम्हारा उतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं आ रहा दोस्त। ओके ट्राई टू अपग्रेड। ठीक है, कल का असाइनमेंट क्या है? 27 नंबर तक के लेक्चर्स को वॉच करके उसकी एक्सेल शीट सबमिट करनी है। Yes. ओके I'll submit the diary I'm making. ओके सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट। ओके Yes, sir. It's similar to Excel also. ओके नो इशू, सेंड मी दैट। Yes. ओके लेट्स कम विद मिस्टर सत्यांशु। Thank you, sir. Okay. Now let's come with Mr. Good Satyanshu. evening, sir. Good evening. Satyanshu, what are the good qualities you have and what are the bad qualities you have? I have a good quality is honesty person and self-motivated, and I have bad quality is few aggressive. Anything else? Bad quality? And only one, I am few aggressive. Okay. Bad quality. Yes. Okay. What's your hobby? Our hobby is creative. Creativity. Creativity. Yes. Like recently, what you created, like which is you can prove that is. And I see the by front. I want to create a plot planning and designing to construct, and engineer is also. Okay. What do you understand by lateral force? Lateral force is a horizontal force is applied. Lateral force is a flow of horizontal of a perpendicular vertical horizontal force is a lateral force is a horizontal force, like apply to like earth wind load is flow in lateral force. Why should I hire you? I am not working in this company. I better result is provide our company. Okay. What's your salary expectations? Company terms. Our salary expectation company terms. As per industry norms. ठीक हो रहा है कम्युनिकेशन, अभी थोड़ा भी और जरूरत है और प्रैक्टिस करो। कुछ कर रहे हो, लग रहा है इम्प्रूवमेंट कुछ तो हो रहा है। सर इंट्रोडक्शन एक अपने से मतलब मुझे पता था तुम इंट्रोडक्शन बना के बैठे हो, इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा वो कोशिश नहीं है कि जो आपको आता है वही हम पूछे, हम वो चाहते हैं जो आपको नहीं आता वो हम पूछे, जिससे आपको दिखे कि यार ये भी कोना मेरे को ठीक करना है। ओके, ऑडिबल नाउ? सत्यांशु माइक ऑफ हो गया तुम्हारा। ओके, हेलो। ये सत्यांशु सर आई टेल इंट्रोडक्शन, मतलब सर नया मतलब जो बना है वो सही है या नहीं, एक बार आप चेक। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, sir. Sorry, good evening, sir. First of all, thank you this opportunity. I am Satyanshu Srivastava from Basically Varanasi. I had completed diploma in civil engineering from Soviet University, and after that, I continue in BTech in civil engineering from Abdul Kalam Technical University in the year of 2021. Then I joined the Lakshmi Civil Engineering in
year of 2021 itself as site engineer. Over then roles or our roles, job roles is construct to overhead tank and water treatment plant. After that, I believe to work from structure designing. So I had started to learn related tools, softwares, and enhance our skills. सर ये सही आप है? सही है, लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो तुमने सही बोला कि आई जस्ट जॉइन दैट लक्ष्मी ग्रुप एंड देन यू जस्ट वर्किंग फॉर द ओवरहेड टेक एंड अंडरग्राउंड ट्रैक, राइट? एंड like at the time of working I realized कि I like to do the structures engineering things more. So after that I'll just गड़बड़ हो रहा है। तुमने जस्ट बोला कि लक्ष्मी ग्रुप में मैंने काम किया एंड आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग द इंटर्नशिप। इससे Learn पहले and बोलना है related कि tools and top you designing just के लिए. while working you feel like कि I need to upgrade myself much more. Then I just realized that I am much interested in structures. While working, I feel I need to upgrade myself, and at the time of I need to upgrade myself, and I feel like I am much interested in structure engineering field. That's why I just joined the structure engineering internship with Gurukul, or you can say Unique Civil. Under this internship, I'm learning all the concept which is required for a structure engineer, like AutoCAD, StatPro, ETABS। तुम इसे मेंशन करो, उसके बाद उसके अंदर टॉपिक्स मेंशन कर दो, फिर वो सब कर दो, ठीक है? Okay, sir. तो जो ऐड Okay, कर रहे हो sir. तो वहाँ बोलो कि while working I thought कि I need to upgrade myself. At that time I feel कि I can upgrade structure engineering, और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा बोलो। Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच सत्यांशु। एंड कितने लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम कर लिए तुमने? Sir 22 RCDC ये गड़बड़ कर रहे का हो। 27 तक सबको करना चाहिए ना एक्सेल शीट? नहीं सर वो। हाँ बोलो। ओके सर, ओके सर, एक चीज पूछा था, जो ये QTR वाला दिए हैं तो इसका सर हम एडवांस कंक्रीट डिजाइन भी ना करें, कंक्रीट डिजाइन भी ना करें, सिर्फ इसमें लोड अप्लाई करके हम इसको RCDC में ला के फिर बीम कॉलम का अलग अलग करके ऐसे भी कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, कल मुझे 27 तक एक्सेल शीट दिखाओगे, ठीक है? ओके सर। ओके, नाउ लेट्स कम विद मिस्टर शुभम एंड देन आई विल टॉक विद प्रखर एंड राकेश वांट टू आस्क समथिंग। Good evening, sir. Good evening. Shubham, recently preparing for the structure engineering, right? So what you feel, why structure engineering knowledge is important? Sir, I've been working in this field like in BIM field since 1 year. So I have learned many things. If you know certain things like in structure and architecture and even analysis, if you learn everything, like it's a part of construction. So if you combine everything, it will be become a complete construction model, or you can say BIM model. Okay. So I think it's necessary for me to for me it is like it. I feel sometimes it is like very necessary to understand everything, every concept about the construction. So I joined this. Recently you learned that seismic analysis, how to calculate the seismic forces. So what are the steps? How can we calculate the seismic analysis? In software? No, manually. Manually, I don't know, but okay, in software how can you do? There is a formula you need to upgrade, na? So what is the formula? How can we calculate the seismic pressure? Seismic pressure? Yes. Still don't know, sir. Base year. What is base year? Base year, the total force which is acting on a particular footing or any foundation portion. Okay. So for calculating the base year, there is a formula H into W. So W is weight of the buildings. How can we calculate the weight of the building? So like weight of the buildings, column weight, slab weight, beam in weight. Seismic load, in seismic load, we when we analyze the building, and we'll go to result,
And after in result there is a certain portion like every load is calculated on each floor, and there is some, I don't know sir, but I know where it is, but I don't know how to calculate it manually. तुम आई डोंट नो बोल रहे हो, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने से पहले ही मुझे को पूरा आइडिया था कि तुम्हें किस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। ठीक है, एज अ टीचर वी नो व्हाट यू डोंट नो। ठीक है, हमें पहले पता था कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के पूछा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ये एरिया वीक है। ठीक है, मुझे Yes तुमको sir, यही definitely. दिखाना है कि अभी तुम्हें ए एच इंटू डब्ल्यू, ए एच नहीं पता है, डब्ल्यू भी नहीं पता है, और इसको मैनुअली कैसे कैलकुलेट करना नहीं पता है। सेम थिंग विथ Yes sir. विंड। ठीक है, विंड में भी तुम K1 K2 K3 तुमको नहीं पता है, राइट? सर वो पता है मुझे, क्योंकि मैं आज पूरे दिन बैठ के, आज मैं 1 घंटे खाली था सर, और प्रोजेक्ट का इतना हेक्टिक है सर, ओके वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे साइन हुआ, और वो लैंग्वेज भी टच है, मुझे सब कुछ करके देना है सर। ओके, देन एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट विंड प्रेशर। So VZ is equal to VZ is equal to VB K1 K2 K3. What is VB? Basic wind speed. Okay, how much basic wind speed in your area? 39 meter per second. And then K1 K2 K3? K1 is risk coefficient, or you can say probability factor. K2? And K2 is the height related portion, and K3 is terrain category. Explain K2. So K2 height factor, which is depend on upon the area to area, how the structure, sorry, the height of the structure. Which The structure? building. If we increase the pressure of wind increase vertically, like if it will go higher, the wind pressure will be higher. K2 is for surrounding building. Okay. Surrounding building. K2 is for surrounding building, means building height is important, but Yeah. approx जो हमारे घर की, जो हमारा साइट है उसके बाहर कितने फीट की बिल्डिंग्स बनने वाली है, दैट डिफाइन द टेरेन कैटेगरी। ठीक है, टेरेन कैटेगरी मींस कितने, अभी जैसे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरे आसपास कितने फ्लोर की बिल्डिंग्स बनी हुई है। इट मे बी 10 मीटर, इट मे बी 20 meters. Suppose in surrounding of my construction there is a 20 meter construction are already there, and if I am just constructing the 3 meter construction, ये सेफ होगा ना बहुत ज्यादा? Yes, चारों sir. तरफ से बिल्डिंग घेरा हुआ है, 3 मीटर का स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ेगा? वो सारे प्रेशर वो झेलेंगे, हमारे पास आएगा ही नहीं कुछ सर। Yes, so for that K2 is there, terrain category. Definitely. Okay, Yeah. and what is K3? So actually K3 is terrain category. Terrain category. Then Yeah. what is topography factor? Oh, sorry. Topography vector. Sorry, sir. Explain topography factor. Topography factor depends on the geometrical reason, or you can say the What values we take? So it depends, varies upon area to area, sir. जो ताजी मिठाई होती है थोड़ी गीली होती है, ठीक है, तो अभी पढ़े हो तुम पर पूरा सही से नहीं पढ़ पाए हो। If the angle where we construct the building angle is less than 3, we consider the value is 1, and if that is more than 1, so that value will consider that is 1.3. What is K4? Sorry, sir. Anything about K4? I think there is no K4, sir. It is. That is for cyclone factor. Cyclone factor. Okay. So we don't have sorry, in our area there is no cyclone, or we maybe face sometime like in a decade or something. But as per code you need to explain, na? Yes, sir, definitely. As per the code there is a K4 also. In 2016 was a update version, there is a K4. That value will take 1. Okay, and this is what? This is basic wind speed you calculate, and K1 K2 K3 split. Okay. Okay. Now how many seismic zone in India? So 4 seismic zone, 2, 3, 4 and 5. Give me the factors.
In two factors are in second zone there are a very low risk of earthquake, and then 2 3 it increase like numberly How much? 2 3 4 5. So in category 1 it is maybe 1, and category 2 1.6. ठीक है, पढ़ाई करो। शुभम, तुम्हारा अभी ना स्ट्रक्चर में तुम अच्छी बात है, तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, इम्प्रूव करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। बट इम्प्रूव थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, इनको टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा वीक है। मैं तुमसे एचआर का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? मुझे पता है तुमने इतने इंटरव्यू दिए हैं, तुम्हारा एचआर परफेक्ट है, तुम्हारा बीम का भी क्वेश्चन परफेक्ट है, क्यों नहीं पूछ रहा हूँ कि परफेक्ट है। मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि देखो ये वाला एरिया खाली है ना, तो यू नीड टू सर मैं एक हफ्ते से पढ़ाई भी नहीं किया, मेरी तो अभी सर मैं 16 लेक्चर तक वॉच किया हूँ, अभी मुझे पूरा कंप्लीट करना सर, कैसे भी कर दूँ। यस, और वो सर आरसीडीसी तो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया सर, 2 बार तो मैंने कोशिश किया। कल करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर के बाद जो आएंगे सबका करवा दूंगा स्क्रीन शेयर करके, तो जो पूरा लेक्चर वॉच करेगा उसके बाद मेहनत करके वेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सेकंड क्या करो कि जो स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं ना, जैसे अभी अभी तुम 16 पे हो, तो तुमने काफ़ी चीज़ें तो पढ़ी ही नहीं, है ना। अब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछता हूँ, मैं उन लेक्चर्स के अंडर ही पूछता हूँ जो लेक्चर अपने हो चुके हैं। 2 4 क्वेश्चन तो बाहर से जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे अभी सुनील का क्वेश्चन था कि वो बिजनेस करना चाहते थे, उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत चेंज तो होगा क्वेश्चन, बट जैसे कि लेक्चर पूरा वॉच किए रहोगे तो मैक्सिमम आंसर आराम से दे पाओगे, ठीक है। Yes, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है शुभम, कि अब तक में जितने हमारे मॉक हुए हैं उसमें मैं बता क्या नहीं पाया, वो लिखा है क्या हमारे पास, ठीक है। अगर कोई कुछ न करे, मैं एकदम सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर के 10 मॉक निकाल लो, कोई भी अपने स्किल गुरुकुल पर सारे पड़े हुए, 10 मॉक का केवल ये देख लो कि 10 मॉक में जो स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से मुझे नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं आ रहे हैं उनको लिख के उनके आंसर्स कर दो, खत्म, ठीक है। कोई मॉक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले, इंटरव्यू ना निकले, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। Yes, sir. चलेगा, ओके। नाउ व्हाट स्कोर्स एवरीवन गॉट, जस्ट टेल यू, वांट टू टेल यू, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लोगों के नंबर्स कटे हुए हैं, तो राकेश गॉट 4, कुलजाजी गॉट 5 एंड आफ्ताब गॉट 6, विश्वजीत गॉट 4 एंड विकास गॉट 4 एंड विशाल गॉट 5, सुनील गॉट 5, शुभम गॉट 6, प्रखर गॉट 4 एंड सत्यांशु गॉट 4, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर नंबर कटे हुए हैं, आपके कम्युनिकेशन पे, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हर इंटरव्यू में ऐसा होने वाला है आपके साथ। नाउ विशाल का कोई सॉरी पहले राकेश का क्वेश्चन है, बहुत ऐसे पूछ रहे हैं। यस राकेश बोलो। राकेश आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस किया आपने? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर मतलब थोड़ा पर्सनल है कि आपने मतलब ये सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब अच्छी पोजीशन पे हो, तो कैसे मतलब आपका रूटीन क्या था स्टार्टिंग में, आपने कैसे मेंटेन किया, और हम कैसे अपन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कल पूछना, बताओ। ठीक है, रीजन बता देना आप जब भी आपको टाइम मिले। 4 मिनट है और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 4 मिनट में, तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, बता देना वो आप जब टाइम चलेगा। प्रखर ठीक है सर, एक मैंने असाइनमेंट भेजा था, आपने जो प्रोजेक्ट भेजा था ना कल, हाँ हाँ, क्या मैंने वो बनाया था आपको, मतलब स्टेट प्रो में उसको अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो एक बार वो देख लो। वो तो हम चेक ही करने वाले हैं कल, ठीक है, इसीलिए तो आज प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ ना, कल हम प्रोजेक्ट नहीं किया सर, मैंने केवल उसका आउटलाइन बनाई है, उसको स्टेट प्रो में कन्वर्ट करने के लिए। आउटलाइन किया है तो उसको स्टेट प्रो में कर लो कन्वर्ट, हम कल दोनों ही चेक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। प्रखर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस प्रखर बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में सिस्मिक लोड लगाया था, हाँ, उसमें एडवांस कंक्रीट डिजाइन भी हमें करना है इसमें? मतलब नहीं, कंक्रीट डिजाइन किया सफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब सर जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें मैंने हमारा सिस्मिक भी जोन 5 लिया है, एडवांस करने की जरूरत नहीं है, एडवांस का कोई आवश्यकता नहीं होता है, केवल नॉर्मल स्टेट किया तो सफिशिएंट होता है। बता सर मैंने स्टैट में मॉडलिंग करी, लोड्स वगैरह ये सब अप्लाई किया सेस्मिक के हिसाब से, जैसा प्रोसीजर आपने बताया था। उसके बाद एनालाइज किया तो एक वार्निंग आ रही थी, वही जो आपने बताई थी कि वो आएगी, वो बाद में आप बताएंगे। तो सर इसमें एडवांस कंक्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सर एडवांस कंक्रीट कहाँ यूज होता है? एडवांस कंक्रीट तुम्हें जब जानना है कि इसमें हॉगिंग कितना आ रहा है, सैगिंग कितना आ रहा है, तुम्हें जानना है। जैसे मैं बोलूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग क्यों नहीं गए, अरे भाई मुझे जानना ही नहीं था कितना सीयर आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, लास्ट में देखेंगे। जानना है तो चले जाओ, मना तो कर नहीं रहे। जी सर, ठीक है। तो वो सिर्फ देखने के लिए सर, सिर्फ देखने के लिए, वांट टू चेक दैट, क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लो,
जी ठीक है। मतलब अभी मुझे फोन करना है तो मैं कोई भी मोबाइल से कर लूंगा ना, तो मेरे को सैमसंग से कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मुझे फोन से मतलब है। जी। यू नीड टू डिजाइन था तो यू कैन स्टार्ट प्रो से डिजाइन कर लो, खत्म। तो स्टैट प्रो में जैसे हम कंक्रीट प्रॉपर्टीज वगैरह डालते हैं सर, और जो उसके साइज वगैरह डालते हैं उससे कब हो जाता है डिजाइन, सफिशियंट, आईएस बेस्ट है। कोड लगा के? यस यस, जी आई इसको डाला है तो ऑलरेडी वो डिजाइन कर देगा। जी। चलेगा। विशाल कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यस विशाल बोलो। सर वो G++ मैनुअल का जो एप्लीकेशन में वीडियो है ना, वो हाँ, हमारा क्लास में होने वाला है या नहीं अभी से वो प्रिपरेशन? अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ डाउट आएगा वहाँ हम हेल्प करेंगे आपका, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ बता रखा है, उसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, मतलब न्यूमेरिकल इन द सेंस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे देना नहीं है कि प्रोजेक्ट करके आओ। तो यू नीड टू हाँ वॉच फ्रॉम योर सेल्फ। मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा उसका एक साथ। कहीं डाउट आता है कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट। हाँ सर, क्योंकि क्या हुआ, अभी 27 लेक्चर में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, तो अभी कॉन्फिडेंस आएगी कि छोटा सा स्ट्रक्चर में डिजाइन कर सकते हो। तो मैनुअल कंसेप्ट क्लियर होने के लिए उसके साथ में अगर कर लो तो हाँ कर लो, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज हो ग्रेट, जाएगा। ये तो और अच्छा हो ओके जाएगा। सर। ठीक है, ओके चलेगा। आफ्ताब कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस आफ्ताब बोलो। सर वो थोड़े प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा था। वो मतलब मैं ना अब मॉडलिंग करके मैं इंपोर्ट करता हूँ स्टैट में। इंपोर्ट करने के बाद वो 0,0 पे लेके आता हूँ। वो करेक्ट। 0, आने पे सारे मेंबर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने वो आपने बोला इसको इग्नोर करो, मैंने वो एनालाइज सब किया, लोड सब डाला। फिर क्या आता है, वार्निंग आती है कि ये क्या कहते हैं, वो डेप्थ में फेल हो रहा है करके, वो 2.5 इनटू डेप्थ रेशियो। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, हम दोनों हाँ सॉल्व उसके करेंगे। हाँ और हाँ बोलो। वो उसको मैंने ना यूट्यूब पे देखा था, उसने कुछ ENSC करके जाके वो डिफाइंड पैरामीटर्स में जाके उसने कुछ प्रॉपर्टी फैक्टर बॉक्स को में वन जाते डाला। हैं, प्रॉपर्टी बॉक्स में जाके हाँ वहां पर फैक्टर को वन ले लेंगे, यानी इसका बता दूंगा मैं कल, ठीक है, करके दिखा हाँ दूंगा मैं। स्पेन सर, डेप्थ और में। एक और। बोलो। हाँ सर, और एक और ना, जब वो मेंबर्स वो छोटे आ रहे करके, आपने लास्ट लेक्चर में जब वो प्रोजेक्ट आपने बोला था कि उनको मर्ज कर दो। जब उनको हाँ, मैं मर्ज करता हूँ तो वो क्या हो रहे हैं, वो बीम्स वो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है। जब वो चेक डुप्लीकेट स्ट्रक्चर पे जा रहा है तो वो ये अलग हो क्यूटीआर जा वाले रहे में आ हैं रहा वो। है ना? हाँ ठीक है, तुम फाइल ठीक है भेज दो, कल हम चेक करके तुम्हें करके दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम तो मेरा जी सर। कंप्लीट हो गया ना, तो दूसरे बैच के बच्चे वेट कर रहे होंगे ना। कोई नहीं सर। ठीक है, तो हम कल यस सर, करके यस दिखा सर। देंगे, ठीक है। ठीक है, किसी क्वेश्चन है तो ठीक कल है हम लोग सर। डिस्कस करेंगे। ओके।